आज के इस लेक्चर में हम स्कैटरिंग थ्योरी एंड पार्शियल वेव एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लासेस में स्कैटरिंग थ्योरी का जो फर्स्ट केस था विच इज़ पार्शियल वेव एनालिसिस, उसके लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन की इक्वेशन ड्राइव की थी। और आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल अगर हम तब्दील करते चले जाएं, यानी मिसाल के तौर पर इस फिगर को अगर आप देखें तो से दिस इज द टारगेट। अब ये एक फिजिकल टारगेट नहीं है जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। क्वांटम पार्टिकल के लिए ये जो टारगेट है, बिकॉज दिस इज द नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, तो दिस कुड बी एनी पोटेंशियल। और अब हम पार्शियल वेव एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं उसमें डिफरेंट पोटेंशियल को तब्दील करते हुए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर हम उनमें फ़र्क देखने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल चेंज होने से टोटल क्रॉस सेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस हवाले से जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन मैं ले रहा हूँ, एंड दैट इज़ स्कैटरिंग फ्रॉम डिराक डेल्टा पोटेंशियल। और डिराक डेल्टा फंक्शन के हवाले से आप वाकिफ हैं, यानी उसको इस तरह से लिखा जाता है वी आर इज इक्वल्स टू वी नॉट डेल्टा आर माइनस ए, where v naught is the strength of this potential, and this function is defined either at origin or some other point, for example a. और इसकी इस प्रॉपर्टी से आप वाकिफ हैं, पिछली क्लासेस में हमने इस्तेमाल भी किया है. If you look at the figure, for example, let's suppose if the Dirac function is defined at x is equals to 0, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप डेल्टा फंक्शन को किसी फंक्शन के साथ जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये शिफ्ट हो जाता है at x is equals to 0. डेल्टा x का मतलब होता है the delta x defined at x is equals to 0. लेकिन अगर इसी डेल्टा फंक्शन को आप ओरिजिन के अलावा किसी और जगह डिफाइन करेंगे और इस फंक्शन के साथ फिर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस फंक्शन शिफ्ट्स टू दैट पॉइंट वेयर द डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड. तो ये एक प्रॉपर्टी है. तो अब हम इसी तरह का एक डेल्टा फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसका जो पोटेंशियल है वो इज द काइंड ऑफ Dirac delta function. But let's fastly recall the previous topic. Previously, we obtained the cross-section without imposing any limitation of the strength of the potential. यानी क्लास में जब हमने पार्शियल वेव एनालिसिस की इक्वेशन ड्राइव की थी तो वहां पे हमने एक पोटेंशियल तो कंसिडर जरूर किया था, एंड दैट वाज सेंट्रल पोटेंशियल. डिपेंड्स ऑन आर, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमने नहीं कहा कि पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है. We assume here that the potential to be spherically symmetric, and so that the angular momentum of the incident particle will therefore be conserved. A particle is scattering from the central potential will have the same angular momentum before and after collision. So this is the condition for elastic scattering. और उस हवाले से the scattering amplitude हमने ये इक्वेशन हासिल की थी सेंट्रल पोटेंशियल को कंसीडर करते हुए. So from that equation we obtain the differential cross section d sigma over d omega is equals to f theta square. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया था और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमने ये टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल लिया था. So this is the total cross section
of course depends on L. L is an orbital angular. So the total cross section depends on L. L is an orbital angular momentum. This is equals to 4 pi over k square limit L0 to infinite 2L plus 1 sin square delta L. और हमने ये भी देखा था कि ये जो डेल्टा L है, this is in fact the difference with respect to the incident particle. तो जब किसी भी पोटेंशियल से पार्टिकल स्कैटर होता है तो उसके अंदर एक फेज शिफ्ट आ जाता है, और इसी फेज शिफ्ट से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं. सो व्हेनेवर वी need to determine the total cross section, so what we need to do here to determine delta L, जब भी हम डिफरेंट पोटेंशियल के लिए डेल्टा L निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो वो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं. तो चलें अब हम जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो फर्स्ट केस है, वी कंसीडर द पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम डिराक डेल्टा फंक्शन, और उसको जब आप प्लॉट करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये कुछ एक स्पाइक और एक इम्पल्सिव फंक्शन होता है. इसकी विड्थ जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है. यहाँ पे एक फाइनाइट विड्थ मैंने सिर्फ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए दिखाया है, लेकिन दिस इज ऑलमोस्ट 0 विड्थ, और जो हाइट है ये डिपेंड करती है कि डेल्टा फंक्शन की स्ट्रेंथ क्या है. तो अब अगर फर्ज कर लें कि दिस इज द पॉइंट से x इज इक्वल्स टू a, जहाँ पे डेल्टा फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो उसके बाद जो उसका जो लेफ्ट और ये जो पॉइंट है इसको मैं a माइनस एप्सिलॉन कह रहा हूँ. एप्सिलॉन इज एनी नंबर बट वेरी स्मॉल, so that we have almost 0 width of this function. तो ये a minus epsilon होगा, और ये वाला point है ये a plus epsilon होगा. Consider the case of low energy scattering from spherical delta function, for example Vr is equals to V naught delta R minus a, where V naught and A are constant. In fact, A is a coordinate of the delta function, and V naught generally we consider the strength of this delta function. कि delta function की जो intensity है वो कितनी होगी. So first we solve the Schrodinger equations. If you recall, we have written this equation before by just using the variable separation method. UR divided by R and YLM, this is the spherical harmonics, where UR is equals to R, and the radial function is related to the radial wave function and satisfies the reduced radial equations. तो in fact ये जो UR है ये एक radial function consider कर रहे हैं, along with the spherical harmonics depends on theta and phi. Or by just applying the variable separation method, we have written these equations in the last class, where VR is the potential, और यही वो potential है जिसको हम different application में तब्दील करेंगे. यहाँ पे जो ये potential है, this is the Dirac delta function, and this is an angular term, and UR is a radial function, E is a total energy, and UR. Subject to the boundary condition that UR is equals to 0, subject to the boundary condition that the function is 0 at R is equals to 0. And this makes sense because if we define the Dirac delta function at x is equals to a, तो जब Dirac delta function x is equals to a पे है तो फिर function को भी सिर्फ x is equals to a पे ही survive करना चाहिए, और बाकी
तमाम जगह पर जो अदर देन a है उस पे 0 हो जाएगा। तो अगर मैं r0 ले रहा हूँ तो ज़ाहिर है फंक्शन भी इस पॉइंट पर 0 के बराबर होगा, और ये वो बाउंड्री कंडीशन है जो कि मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। इन द लो एनर्जी लिमिट we may assume that Ka is very small, where K is a propagating constant, and this K is proportional to the energy, in fact, so that only S wave scattering is important. यानी जब हम लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात करते हैं तो उस केस में जो L है, दिस इज एन एंगुलर मोमेंटम, वो 0 कंसीडर किया जाता है. That means for the case of low energy scattering, only particle participate in the scattering, those stay on L is equals to 0 state, और इसको हम S wave scattering कहते हैं. तो ये जो हमारा फर्स्ट केस है जो हम अभी कर रहे हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल, इसमें हमारी assumption है कि the scattered particle, I'm sorry, the incident particle has very low energy and L is equals to 0. इनफैक्ट m तो हमने पहले ही 0 कर दिया था जब हम पार्शियल वेव एनालिसिस की बात कर रहे थे, यानी फाई डिपेंडेंसी को हमने इग्नोर किया था. यहाँ पर हम लो एनर्जी लिमिट में L is equals to 0 कंसीडर कर रहे हैं. तो अब अगर हम L is equals to 0 यानी S स्टेट स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर ये वाली जो एंगुलर टर्म है ये तो खत्म हो जाएगी, और ये जो पोटेंशियल है इसकी जगह पे मैं ये डिराक डेल्टा फंक्शन इनकॉर्पोरेट करूंगा. Okay, so the above equation can be rearranged as follows. Let's we call equation number 1, where the energy is equals to h cut square k square over 2m. और जो पहले हमने कहा था कि जो k है वो एनर्जी के प्रोपोर्शन होता है. So for the smaller energy, of course, k is smaller. For r is equals for r not equal to a, the delta function vanishes, and we can solve the simple equation as follows: d square u divided by dr square is equals to minus k square u of r. और यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन को हमने a पर डिफाइन किया है, और जो डेल्टा फंक्शन है वो स्कैटरिंग पॉइंट है. तो जो इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो भी उस स्कैटरिंग पॉइंट से दूर हैं, और जो स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो भी उस स्कैटरिंग पॉइंट से दूर हैं. और ये कंडीशन हमने पार्शियल वेव एनालिसिस की कंडीशन, और ये कंडीशन हमने पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया था. तो दोनों लिहाजा मैं इस कंडीशन पर इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और उसके बाद फिर एक ये जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव यूजुअल सॉल्यूशन a sin kr and b sin kr. This is a solution at r smaller than a, that is before the scattering point, and b sin kr is defined far from the scattering point or greater than a. Where we have imposed the boundary condition at the region that r is equals to 0, that means u is equals to 0. In fact, यहाँ पर साइन के साथ कोसाइन भी आता है, लेकिन इस बाउंड्री कंडीशन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो कोसाइन वाला जो टर्म है वो 0 के बराबर हो जाएगा. So we only left with a sin kr and b sin kr. So keep in mind this a sin kr corresponds to the incident particle, of course. I mean the far from the central, so keep in mind that a sin kr is the incident particle wave far from the Dirac delta function, and b sin kr is the scattered particle wave far from
the Dirac delta functions. Okay, so you also recall कि जो scattered particle का जो wave function है उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था, यानी एक amplitude था और sine of kr minus half l pi plus delta l, and this delta l is the phase shift in the scattered particle as compared to the incident particle, और ये जो है ये angular term है. तो हमारे पास जो the b sin kr है, इसके अंदर हमें एक फेज शिफ्ट डालना होगा because the scattered particle has a phase shift as compared to the incident particle. तो by using this equation, इसमें ये वाला पार्ट तो मैं जीरो कर दूंगा because we consider here s wave scattering l0, तो जो साइन है वो kr plus delta l हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में. So लिहाजा हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इंसिडेंट पार्टिकल का जो वेव है वो तो a sin k of r ही होगा, but the scattered particle has a wave equation b prime sin kr plus delta naught, and this naught corresponds to the l is equals to 0. To make further progress, we must impose the correct boundary condition at r is equals to a. R is equals to a is the point where the delta function is defined. So we have two boundary conditions. U of r is continuous at r is equals to a. आपके इल्म में है कि let's suppose this is scattering center, तो जो incoming particle है वो outgoing particle के साथ continuity का जो let's suppose this is the delta function, the center of scattering. So let's suppose this is the delta function and the scattering point. तो जो incoming particle हैं वो continuity equation को follow करेंगे with respect to the outgoing particle. तो एक तो quantum mechanical wave function की ये property होती है whenever the particle cross the barrier or cross the boundary, then in either side the particle follows the continuity equations, and r is equals to a is the boundary in this case. So u of r is continuous at the boundary, and second boundary condition in fact ये होता है कि इसका जो differential है वो भी continuous होना चाहिए. लेकिन इस केस में हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन बनेगी वो ये होगी, यानी इस डेल्टा फंक्शन से जस्ट बिफोर a माइनस एप्सिलॉन के ऊपर du और dr and the second boundary condition is as follows. इसको हम मजीद समझने के लिए कि ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ से आती है, boundary condition 2 arises after integrating equation number 1 from r is equals to a minus epsilon to a plus epsilon. और इस केस में आपको ये कंसीडर करना होगा कि epsilon is approaches to 0. तो इक्वेशन नंबर 1 पे अगर मैं दोबारा से जाऊं तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ऑन बोथ साइड और साथ साथ dr से मल्टीप्लाई भी करूंगा. तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. इसको आप करके देख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा. इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स. The right hand side is 0 as a consequences of the boundary condition number 1.
Above, I have also used the fact that for any epsilon doesn't equal to 0, no matter how. Above, I have also used the fact that for any epsilon doesn't equal to 0, no matter how small it is. तो ये जो डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले कहा था कि किसी भी फंक्शन के साथ जब डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो जो फंक्शन है दैट शिफ्ट्स टू द लोकेशन ऑफ द डेल्टा फंक्शन, तो ये एफ ऑफ आर जो है ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। और फॉर एनी वेल बिहेव फंक्शन द रिमेनिंग इंटीग्रल इज एज फॉलोज, यानी ये वाला जो पार्ट है that can be written as du or dr at this point and du or dr at this point. So delta function का एक एंड जो है वो ये होता है, दूसरा एंड ये वाला होता है। तो जब आप इसको और ये जो डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हासिल हो जाएगी, जो कि मैंने पिछले पेज पर दिखाया था। Let me show you again. ये वाली बाउंड्री कंडीशन। तो ये भी इसमें आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। Okay, let's move on to the next. So equation number 4 now become, यानी जो हमने इक्वेशन नंबर 4 लिखी थी in terms of u, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास के ए कॉस के आर हो जाएगा एंड के बी प्राइम कॉस के आर प्लस डेल्टा नॉट। Keep in mind that this wave function corresponds to the incident particle far before the scattering point, and this wave function corresponds to the scatter wave far from the delta function. So now let's apply boundary condition 1 and 2. So तो उसके नतीजे में पहली बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशंस वाली, तो वो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे यू विल हैव दिस इक्वेशन। सो 2 इक्वेशंस हमें मिलेंगी। उसके बाद जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर होगा, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन cot के ए प्लस डेल्टा नॉट is equals to cot ka plus 2m v naught divided by h का square k। तो ये सिंपल अलजेब्रा है, आप लोग कर लीजिएगा। So which is an implicit equation for the S wave phase shift. So in order to find delta naught, जो कि हमें निकालना है in order to determine the total cross section, we may use the trigonometric identity। यानी इनफैक्ट यहाँ से अगर मुझे ये डीकपल करना है cot के ए और cot डेल्टा नॉट को, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा इक्वेशन नंबर 5 में। और जब आप ये करेंगे और उसको फिर थोड़ी सी उसमें रीअरेंजमेंट है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके नतीजे में you will get this equations. In fact, cot delta naught is equals to the whole term. It is slightly more convenient to rewrite the above in terms of tan delta, which is inverse of cot delta naught. तो आपके पास ये भी रिवर्स हो जाएगा और ये वाली जो ब्रैकेट है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। That means is a whole power minus 1, where we have used the identity 1 plus cot square ka is equals to 1 over sine square ka, and the definition of the cotangent, a simple rearrangement yields the desired results. For example, ये आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, और इनफैक्ट यहाँ से अगर मैं डेल्टा नॉट निकाल लूँ तो फिर मैं वहाँ से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूँ।
Okay, so if you recall, the partial wave expansion of the scattering amplitude is given by, ये हमने पहले भी किया हुआ है, बस फर्क ये है कि चूंकि हम एस वेव स्कैटरिंग के तौर पे कर रहे हैं तो ये L 0 हो जाएगा, so the whole bracket has gone, and ये P naught cos theta हो जाएगा, and P naught cos theta is equals to 1. इसको ये भी खत्म हो गया, so you only have f of theta is equals to exponential power iota delta naught sine delta naught divided by k. Applying the lower limit case, ka is very small in equation number 6. तो उसके नतीजे में आप जानते हैं कि साइन का अगर आर्गुमेंट बहुत ही स्मॉल हो तो जो साइन के है वो के ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं के ए स्क्वायर कर दूंगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी, साइन के ए की जगह पर के ए रख दिया जाएगा, एंड कॉस का अगर आर्गुमेंट बहुत स्मॉल हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है, तो मैं कॉस के ए को 1 कर दूंगा। तो इन तमाम कंडीशन पर आपके पास जो इक्वेशन नंबर 6 है वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, right? Okay, so and also equation number 7 में ये जो आपके पास न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट है, इसको हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पर इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, and this could be equal to tan delta naught, or once again small angle approximation, so this is equals to delta naught. तो हमारे पास पिछली इक्वेशन में जो न्यूमरेटर में ये टर्म आ रही है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा नॉट। तो इक्वेशन नंबर 7 जो है फिर आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, f of theta is equals to minus a 1 plus h cut square over 2m v naught a power minus 1. इसके लिए आपको थोड़ी सी सिंप्लिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, and you will get easily these equations. So this is scattering amplitude, or in order to find the cross-sectional area, or in fact the total cross-sectional area, तो वो उसको आप f of theta का स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद फिर आप उस सरफेस पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए भी आपको सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करना होगा, और ये इक्वेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। So for the case of Dirac delta potential, in partial wave analysis, we have scattering amplitude as follows, and total cross section is as follows. The above equation corresponds to the scattering amplitude and the total scattering cross section of Dirac delta potential. It can be seen that f of theta and in fact the total cross section sigma do not depend on theta. That is, whenever particle is scattered from the Dirac delta potential, that the particle is scattered equally distributed over all directions. And also the sigma or the total cross section proportional to the area. Look at here, sigma is equals to 4 pi a square, और ये जो सारी चीज ब्रैकेट में है ये एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इनफैक्ट जो इसकी जो डायमेंशन बनती है वो एरिया की ही बनती है, हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पर भी हमें एरिया की ही डायमेंशंस मिल रही हैं। So okay, now this is the end of the today's lecture. इसमें 2-3 एप्लीकेशंस और हैं। मिसाल के तौर पर हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा पोटेंशियल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशनल बॉक्स का जो पोटेंशियल है,
या फिर हम किसी स्टेप पोटेंशियल को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जब स्कैटरिंग प्रॉब्लम किया था तो उस वक्त जो स्टेप पोटेंशियल कंसिडर किया। तो इन एनी केस हम यहाँ पर पोटेंशियल को तब्दील करते चले जाएंगे और उसके नतीजे में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन हमें मिलता चला जाएगा। तो जब हमें डिफरेंट पोटेंशियल में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हासिल हो जाएंगे, then we will able to compare how the potential is changes, I mean the scattering amplitude and the total cross section, right? Okay, Allah Hafiz.